around 2.2 tons into orbit, giving a payload fraction of 0.5. Whereas Mark-III, with a capability of around 3.5 to 4 tons, has a much higher payload fraction to the extent of 0.6. जी हाँ राधाकृष्ण जी, आई थिंक हम लोग इस समय केवल 50 सेकंड की दूरी पर हर धड़कन, हर निगाह स्क्रीन पर आंकड़ों के साथ, और इस समय जो प्रक्षेपण यान है वो पूरी तरह से तत्पर तैयार अंतरिक्ष में यात्रा के लिए. So minus 35 seconds. So we'll start with the ignition of the two solid boosters, which effectively lifts the launcher. Programs activated. Roger. Minus 25 seconds. Minus 25 seconds. Open. Minus 20 seconds. Minus 20. ignition RMS है. 15 seconds. Ignition. 10 enabled. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Now, +1, +2. So S200 ignited 4, and 5, safely cleared 6, the umbilical pedestal. 7, the vehicle is traveling across the umbilical tower. बहुत सफल परीक्षण. दोनों जो स्ट्रैप ऑन बूस्टर थे सॉलिड को प्रज्वलित आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं. तेज आवाज हमारे कानों तक पहुंचती हुई अंतरिक्ष सफर जारी रखता हुआ GSLV Mark-III की पहली उड़ान की प्रायोगिक उड़ान. You can see this, the GSLV Mark-III blazing through the atmosphere. The two solid flames of S200 motors going through the atmosphere. अवलोकित पथ बिल्कुल अनुमानित पथ से तरफ बढ़ता हुआ. बहुत तेज गड़गड़ाहट चारों तरफ, केवल एक ही ध्वनि 200 रॉकेट. We just heard the S200 performance normal. The time is 67 seconds, and the vehicle has almost nearing 14 kilometers, so it has crossed the heavy dynamic pressure region. Now, if you look at the flight sequence, the present flight sequence, the vehicle has to, will go for up to 114 seconds. We will have the ignition of 1110 stage. लगभग 114 सेकंड तक ये प्रज्वलन जारी रहेगा, और उसके बाद जो लिक्विड द्वितीय चरण है वो RTD जो होता है रियल टाइम डिसीजन, वो इसका संवेदन करेगा, और त्वरण मान लगातार घटने के बाद जो 114 सेकंड पर होना है, जहां पे ऊंचाई लगभग 42 से 43 किलोमीटर होगी, वहां पे जो द्वितीय चरण है वो प्रज्वलन हो जाएगा, और प्रथम चरण द्वितीय चरण दोनों एक साथ प्रज्वलित रहेंगे. L110 ignited. So L110 has been ignited. So there is going to be a little bit of overlap between the two S200 solid boosters and the L110. Nominally, the separation of S200 should happen around 148 seconds, and L110 nominal performance has been just declared by the range operations director. The time is 144 and altitude around 63 kilometers. जी हाँ, द्वितीय चरण वो अभी और 320 सेकंड उसको प्रज्वलित होना है. So two solid strap-on boosters have been successfully separated, and the vehicle is in autonomous flight with the L110 ignition going all the way up to maybe burning for another 200 seconds. दोनों जो सॉलिड स्टेज के बूस्टर्स थे दोनों अलग हो जाते हैं यहाँ से, और उसके बाद भारतीय समुद्र में गिर जाते हैं. बहुत सफलतापूर्वक संपन्न हुआ. 180 सेकंड बीत जाने के बाद इस समय जो वेलोसिटी है करीब 2 किलोमीटर प्रति सेकंड पहुंचने वाली है. रेंज करीब 138 किलोमीटर है, और अल्टीट्यूड 90 किलोमीटर हो चुका है. So 193 seconds. Vehicle is attained almost 2 kilometer velocity at around 95 kilometers. The next event, the closed loop guidance has been initiated in the L110 stage of flight, and we have the payload fairing separation going to take place at 232 seconds, maybe another 20 seconds from now. We are able to see on our screen the S200 strap-on boosters, which has been jettisoned using the jettison rocket. 6 numbers in each of the strap-ons is traveling back into the sea. I think some videos have been shown here on the screen. And जी हाँ, ये बहुत
बहुत महत्वपूर्ण क्षण था जब ये अलग हुआ था। प्रथम चरण और द्वितीय चरण का अनुमानित जो पथ है वो बिल्कुल अवलोकित पथ के साथ चलता हुआ, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बहुत ही सामान्य परफॉर्मेंस और हीट शील्ड जो है वो अलग हो चुकी है इस समय 237 सेकंड के बाद में। परफॉर्मेंस नॉर्मल और बहुत ही सामान्य जो निष्पादन है यान का बिल्कुल सामान्य है, अनुमानित और अवलोकित बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर। So successful separation of the payload fairing at 237 seconds when the altitudes are 115 kilometers. We have another maybe around 300 and Alok, I think maybe around 320 seconds nominally L110 should burn out and then have the separation, which will be followed up in the next 5 to 10 seconds, the separation of the care module. बहुत हम लोग नजदीक हैं राधा कृष्ण जी, अगर आप देखेंगे समय तो लगभग 280 सेकंड बीत चुके हैं. Correct. We are very close to it. Maybe another 40 seconds to go when the L110 runs out and separates. And if you look at the plots of the time versus altitude and the velocity, a very close match with the pre-flight numbers. There is the plot for the lower portion is the altitude plot and the upper one is the velocity. So you can see the red one, which is a pre-flight number, and the trace, the green trace which is going over this is the way the flight has been performing. So maybe another 10 to 20 seconds we should have the confirmation of the separation of the L110. So as we were mentioning in the beginning, the L110 separation will take place from the C25 cryogenic stage, and after 5 seconds later the care module will be separated from the C25 cryogenic stage. सिस्टम बहुत सफल है, L110 अलग हो चुका. So separation of L110 has been confirmed, and we also have the confirmation of the crew module also has been successfully separated from the C25 cryogenic stage. जी हाँ, बहुत ही सफल ये दोनों चरणों का निष्पादन रहा है. 320 सेकंड में जब ये अलग हुआ था उस समय वेलोसिटी जो थी, वेग का मान लगभग 4.93 किलोमीटर पर सेकंड, अनुमानित करीब 5 किलोमीटर पर सेकंड था. इस समय रेंज करीब 730 किलोमीटर की हो चुकी है, जब ऊंचाई करीब 121 किलोमीटर पृथ्वी से. इस समय जो केयर मॉड्यूल है उसे अलग करने के बाद वो लगातार नीचे आता जाएगा, और नीचे आने के साथ ही साथ पहले श्रीहरिकोटा से हमने ट्रैक किया, उसके बाद बैंगलोर से, उसके बाद पोर्ट ब्लेयर से. जब हम पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर होंगे, वहां से इसके ट्रैकिंग शुरू रहेगी. करेक्ट. सो the crew module got separated at 330 seconds. Immediately after the separation, the onboard propulsion system which was there in the crew module, the attitude control system has been turned on, and it is in the closed loop mode where it is trying to give the desired attitude for the re-entry of the crew modules. So we can expect the next event roughly around 450, another 50 seconds from now, where the crew module will make a re-entry into the dense atmospheric regime and the altitude around 80 kilometers, where it will undergo the severe aerodynamic braking. So we are able to see the the ballistic path of the crew module as it is descending after the burnout after its separation from the L110 stage. It's descending down now. पर देख पा रहे हैं, यही राधाकृष्ण जी बोल रहे थे कि बड़ी बैलिस्टिक और बहुत ही एक्सपेक्टेड बिहेवियर है, बहुत ही सामान्य बिहेवियर है इसका आने का. और जैसे जैसे जो उन्नयन कोण है वो घटता जाएगा, वैसे वैसे अलग अलग स्टेशंस की जो रिसीव करने की क्षमता वो भी बदलती जाएगी. मेरे ख्याल से इस समय पैराशूट के ऑपरेशन का जिक्र भी आएगा, और करीब इस समय हम 450 सेकंड व्यतीत कर चुके हैं. 5 किलोमीटर वेलोसिटी लगभग वेलोसिटी जो है वो एक नियत हो चुकी है, और रेंज जो है वो करीब 1238 किलोमीटर हो चुका है. हम लगातार पोर्ट बढ़ते हुए. If you look at the time and the altitude plot, the crew module is presently going through the aero braking, the dense atmospheric regime, where it is at 73, so it has crossed the 80 kilometer barrier, and it is in the range of something like 1262 kilometers. The velocity crew module has 15.5 kilometers entered. The apex cover has been separated. The pilot chute has been ejected. It has been deployed. This will be followed up by the main parachute coming up. This was a very significant day of Indian space program. For the development of the advanced launch vehicle that could carry a 4-ton class of communication satellite into orbit, India started the development process a decade ago, and just now we completed the first
experimental flight of the GSLV Mark-III vehicle, christened as LVM Mark-III. The performance of the two solid stages S200 as well as the liquid core stage L110 was as expected. We also had another experimental module in this mission, that is the unmanned crew module test to understand the re-entry characteristics. That also has worked extremely well. The crew module has splashed down as expected in the Bay of Bengal.